Welcome to the series of video lectures on analysis and design of algorithm, that is ADA. In this video lecture we are going to discuss the multi-stage graph problem, which is based on the dynamic programming. In previous lecture we have discussed the same multi-stage graph problem, but that too using forward method. In this video lecture we will discuss the same method using the backward method, because there are two methods to solve that. So the multi-stage graph is directed graph, that is the first property. Before that, the G is equal to V comma E, where V is the set of vertices and E is the set of edges. And some properties are there. First property is that graph must be the directed graph, as shown in this picture or diagram. Second, all the vertices of the graph are partitioned into some stages, some sets, and that to be the disjoint sets. Here there are 5 disjoint sets. One is V1, V2, V3, V4 and V5. I can specify that the V1 is equal to 1, V2 may be, what are they? That is 2, 3, 4 and 5, and so on. V3 will be, that is 6, 7, 8. V4 is equal to 9, 10, 11, and lastly V5 is equal to, let's say 12. यहाँ पर यदि मैं किसी एज की बात करूं 3, 6, so here this will be U and this will be V. So if this U belongs to Vi, then this V belongs to Vi plus 1. Next stage means एज जो फॉर्म होगी वो उसका एक जो वर्टेक्स होगा वो प्रीवियस सेट का होगा, और जो नेक्स्ट वर्टेक्स होगा वो नेक्स्ट सेट का होगा. दैट विल बी द एज. So here let's say this is edge, so this to this. Now the important property, that is the fourth one, that कि पहले स्टेज और लास्ट स्टेज पर जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस होंगे वो कितने होंगे? सिर्फ एक होंगे. So V1 और Vk का जो काउंट होगा वो क्या होगा? 1. What is the problem? Basically the multi-stage graph problem. Given with the source vertex, that is S, and the sink, that is destination T, सोर्स से उस टर्मिनल तक, that is T तक, एक पाथ फाइंड आउट करना है जो कि आपको सोर्स वर्टेक्स से डेस्टिनेशन तक ले जाएगा, एंड विल फॉलो द पाथ फॉर विच द कॉस्ट इज मिनिमम. और इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या कहेंगे? मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम. द सोर्स एंड द टर्मिनल टी. द मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम इज टू फाइंड अ मिनिमम कॉस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू द destination T. Now there are two methods, as I have just discussed. That is the forward method. In forward method we calculate the distances from destination vertex, but in backward method we calculate the distances from the source vertex. That is the difference. So in this video lecture we are going to discuss the backward method, and in backward method how to calculate the cost of a vertex at any stage. Let's say this is 6th vertex at stage 3. So that is cost of 3, 6. That is B cost for backward. The formula, the general formula is B cost of Ij will be, we have to find out the minimum value. L belongs to Vi minus 1. यदि हमारे पास थर्ड स्टेज के लिए हम बात कर रहे हैं, if I is equal to 3, then the vertices from where we have to calculate the distance or comparison, they must be of the previous stage. That is Vi minus 1. यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे. उसके पहले फॉर्मूला है द बी कॉस्ट ऑफ आई माइनस 1 कॉमा एल प्लस सी ऑफ एल कॉमा जे. अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स से बी कॉस्ट ऑफ 3, 6. 3 इज द स्टेज नंबर एंड 6 इज द वर्टेक्स. तो थर्ड स्टेज पर 6 वर्टेक्स का जो कॉस्ट होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? नाउ वी हैव टू परफॉर्म अ ऑपरेशन, दैट इज मिनिमम ऑपरेशन. क्यों? क्योंकि यहाँ 6 पर इस साइड से आने के 2 रास्ते हैं. या तो वर्टेक्स 2 से 6 पे आएंगे या फिर वर्टेक्स 3 से 6 पे आएंगे. सो एज देयर आर 2 पाथ्स वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम वन. जैसे कि डायनामिक प्रोग्रामिंग का जो बेस है वो क्या? द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी. मतलब जो भी आपने इनिशियल स्टेज पर डिसीजन ले लिए हैं वो डिसीजन आपके आगे के पाथ के लिए ऑप्टिमल पाथ की तरफ मूवमेंट देंगे. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी. सो हियर दैट प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी एक्चुअली इज देयर. सो यहाँ पर चूंकि 2 पाथ है इसलिए हम लोग मिनिमम फाइंड आउट करेंगे. तो कैसे? तो अब ध्यान से देखिए. I is 3, so here this I minus 1 as it is shown in the formula. I minus 1 will be 2. Means यहाँ पर आपको इस स्टेज के लिए इस स्टेज के वर्टाइसेस से होके जाना होगा और उसके बीच में कंपैरिजन करना होगा. सो बी कॉस्ट ऑफ 2, 2 दैट इज 2 सेकेंड स्टेज सेकेंड वर्टेक्स प्लस कॉस्ट ऑफ 2, 6 मतलब
सेकेंड वर्टेक्स से 6 वर्टेक्स तक जाने तक का कॉस्ट। सो यहां पर हमने वो कैलकुलेशन वैल्यू लिखी है, बी कॉस्ट ऑफ 2 वर्टेक्स 2 दैट इज 9, देन वर्टेक्स 2 से वर्टेक्स 6 पे जाने का कॉस्ट दैट इज 4, सो 9 + 4 13। सेकेंड कॉस्ट विल बी, अब यहाँ दूसरा रास्ता आने के लिए, दैट इज बी कॉस्ट ऑफ सेकेंड वर्टेक्स का थर्ड सेकेंड स्टेज का थर्ड वर्टेक्स प्लस कॉस्ट ऑफ 3 से 6 पे जाने तक का कॉस्ट दैट इज 2, so 7 + 2 that is 9, and if we compare that 13 and 9, the smaller will be 9, and hence b cost of 3 6 will be 9. So this is how we will calculate the values or the cost for each vertex at each stages. But as this is the backward method, the calculation will start from vertex 1. So first of all, we will calculate the cost of 2 cost of 2 will be directly, we can mention it, that is 9. If we want to calculate the path, we have to maintain a special parameter, that is d. So d of 2 will be vertex 1. ये बता रहा है इस सेकेंड स्टेज के सेकेंड वर्टेक्स पर जाने के लिए 1 वर्टेक्स से 9 is the minimum distance, and that to be through vertex 1, and hence that d22 is vertex 1. Cost 2, 3. Now second stage का third vertex, that is 7, and again this is due to, so d2 of 3 is equal to 1 again. Next distances, that is cost 2 of 4, that will be 3, and this is due to, so d24 is equal to 1 again. Then we will calculate cost of 25 is equal to 2, or due to the vertex 1. Actually this will be used to get the total path from this vertex to the last destination vertex. Now we'll move toward the next stage. Cost of third stage 6 vertex. So we will write minimum of, as it is backward method, we should change it to b cost. So the b cost of 3 6 will be, that is b cost of 2 plus c of 2 6. And second will be b cost of second vertex का second stage का third vertex plus c of 3 to 6, 3 से 6 की तरफ जाता है. Now we'll have to compare that. Cost of 2 is 9. In dynamic programming हम लोग हर नई स्टेज के लिए जब जाते हैं तो पिछली स्टेज का जो कैलकुलेशंस है वो स्टोर करके रखते हैं, ताकि वो आगे की स्टेजेस में हम उसको क्या कर सकें, यूटिलाइज कर सकें. चाहे वो रिकर्सिव फंक्शन हो या नॉन रिकर्सिव फंक्शन हो, हम लोग वैल्यूज को स्टोर करके रखते हैं, कैलकुलेशन करके रखते हैं. तो यहाँ पर हम लोग वही कर रहे हैं. बी कॉस्ट ऑफ 2 वी आर ऑलरेडी कैलकुलेटेड, प्लस व्हाट इज C26, दैट इज 2 से 6 पे जाने का रास्ता, दैट इज 4, एंड we'll compare with that b cost of 2 3, that is 2 3. तो b cost of 2 3 is 7, plus what is 3 to 6? 3 to 6 is 2. So what is the minimum value? That minimum value is 9. And now this minimum value 9 is due to the vertex 3, and hence d of 3 6 3. Next is b cost of 3 7, b cost of 2 2 plus c of 2 7, b cost of 2 3. What is b cost of 2 3? b cost of 2 3 is 7 plus 3 से 7 पे जाने का रास्ता, that is 7 किलोमीटर, comma b cost of 2 5. What is that b cost of 2 5? 2 plus then c of 5 7. 5 से 7 पे जाने के लिए 11 entries there. So whatever is the minimum value, 9 plus 2, that is 11, 7 plus 7, that is 14. So 11, 14 and 13. What is the minimum value? That is 11. So this value will be 11. And ये जो 11 एंट्री आपके पास आई है वो किस वर्टेक्स के कारण आई है? That is using the second vertex. C3, 7 is equal to due to second vertex. B cost of 3 8. Minimum of B cost of 2 2 plus C of 2 8. B cost of second stage fourth vertex plus C of fourth vertex से eighth vertex. B cost of 2 5 plus C of 5 8. We can take any value. So let us take this value, and this is due to the second vertex. D of 3 8 is equal to due to the second vertex. B cost of 4 9 is equal to, that is again we will have to find minimum value. अब 9 वर्टेक्स पे आने के कितने रास्ते? 2 रास्ते, तो 2 कंपैरिजंस होंगे. B कॉस्ट ऑफ 3 6
प्लस C ऑफ 6 to 9. तो यहाँ पर आपको लिखना होगा दैट इज 6, 9. B कॉस्ट ऑफ थर्ड स्टेज का 7th वर्टेक्स 9th पे जाना है, तो 3, 7 प्लस C ऑफ, दिस इज C of 6, 9. So C of 7, 9. And we will have to compare that. What will be the value? That is minimum of, what is B cost of 3, 6? In the previous stage we can get it, that is the 9. That is the principle of optimality. This is optimal result, and that will be used to calculate the results for the further stages. So that is 9 plus what is C 6, 9, that is 6, 3, 7, that is again the previous value, optimal value, that is 11, plus 7 to 9, that is 4. So what is the minimum value? 9 plus 6, that is 15, 11 plus 4, that is 15. So the minimum value is 15 with the vertex 7. Now D of 4, 9 is equal to, take it as 7. D cost of 4, 10 is equal to, 3 comparisons will be there. Minimum of cost of 3, 6, that is 9, plus 6 to 10, 5, comma. Cost of 3, 7, that is 11, plus 7 to 10 का distance, that is 3, comma. Cost of 3, 8 is, the minimum value is 10. 8 to 10 जाने के लिए कितना चलना होगा? 5. So what is the minimum value? So this value will be 14. And this is due to D of 4, 10. Either this can be using, देखिए यहाँ पर 6 के कारण ये value है, 7 के कारण ये value है, और ये 8 vertex के कारण value है. So we can take it as using 7. So this vertex is again 7. Now B cost of 411 is equal to minimum of, now 411 के लिए आपको एक ही calculation करना, because there is a single edge over here. Third stage का 8, तो 3, 8, cost of 3, 8, what is cost of 3, 8, that is 10. So no need to calculate that minimum, but let us write it. And then 8 to 11, that is 6. So what will be the value? That is 16. And this is due to, so D of 411 is equal to 8. Now the last calculation of the last stage. So B cost of 5 and 12. 3 comparisons will be there, because we can reach this 12 vertex with the 3 different vertices. So again I'll write directly, that is minimum of cost of 4, 9. 15 plus यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना डिस्टेंस है? दैट इज 4, कॉमा. कॉस्ट ऑफ 4, 10, 14 प्लस 10, 12, 2, कॉमा. कॉस्ट ऑफ 4, 11. So 16 plus what is the value? From 11 to, that is 5. So what is the minimum value? Is 16. And this is due to the second. Second means this one. And this is due to the vertex 10. So I'll write D of 5, 12 is equal to 10. Now we have to obtain the path from S, that is at the level V1, then V2, V3, V4 and V5. That V5 is T. Let's say this is, I will write it as V1, और V1 पे आपके पास vertex कौन सा है? S, और यहाँ पर V5th stage पर आपके पास vertex कौन सा है? T. So I want to find a path from this S to T. Now what is this? This is 1. What is this? This is 12. So now I'll have to find the paths. To calculate the path, start from this one. V5 is equal to 12. Now V4 is equal to D of 5, 12. This is the way to write. And D of 5, 12 is 10. Means V4 will be 10. Now we'll move to the previous stage, that is V3. V3 will be D of 4, comma, the last stage, that is D of 5, comma, 12. D of 4, D 5, 12, that is 10. D of 4, 10 is actually 7. So V3 is come out to be 7. Now next we'll calculate V2. What is the formula? D of, जो भी वैल्यू यहाँ लिखी है उससे एक ज्यादा से आपको शुरुआत करनी है, तो V2 के लिए आप यहाँ 3 से कैलकुलेट करोगे. 3 of previous stage value, that is D of 4, 10. D of 3, what is 4, 10? D of 4, 10, that is 7. So what is D of 3, 7? Obtain D of 3, 7 is 2. So this is all. And last value is V1 and V1 is 1. So we have obtained the path over here. मैं reverse order में लिखता हूँ. V5, that is 12. Then V4, we have to reach to 10th vertex. Then V3, we have to reach to the 7th vertex. Then V2, we have to reach to the 2nd vertex. And V1, that is the source vertex, that is 1. And this is the path. 1 to 2, 2 to 7, 7 to 10 and 10 to 12. That is 1 to 2, I'll mark it as dashed line.
Then 2 to 7, what is 7? That is 2 to 7, this will be the path. Now 7 to 10, this will be the path, and then 10 to 12, this will be the path. So this is the path. Now what will be the total cost of the path? 9 plus, what is that, 2 plus 3 plus 2. Total cost of the path will be 16. Now we should go for the algorithm of that. We should write the cost is actually 16, and what is path? I'll write the path over here. That is, path is 1, then 2, then 7, then 10, and then that is 12. Algorithm. We will be given algorithm, that is B cost or B graph. Graph will be given to us. The number of stages will be given to us, that is K. Number of vertices will be given, and P is the output parameter for which we have to calculate the total path. So just specify the comments over here. That is, G is graph, multi-stage graph with K stages. What is N? That is, N is number of vertices, and P, that is the path. And that path will be from 1 to K. क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ K स्टेजेस है, तो हर स्टेज के लिए हमें एक वर्टेक्स कैलकुलेट करना होगा ना. ये बैकवर्ड मेथड है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना होगा. जो फॉरवर्ड मेथड थी उसमें हमने यहाँ से स्टार्ट किया था. नाउ सो हियर स्टार्टिंग विथ, नाउ वी विल यूज द वेरिएबल एज बी कॉस्ट ऑफ दैट इज 1 इज इक्वल टू 0.0. इनिशियली यहाँ पर कॉस्ट क्या रहेगा आपका? 0. नाउ विल हैव टू कैलकुलेट the cost for the remaining vertices. दूसरा, यहाँ पर जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो अभी तक जितने हमने कैलकुलेशन किया हमने स्टेज नंबर को इंक्लूड किया. दैट इज बी कॉस्ट ऑफ 49 मींस 4th इज द स्टेज एंड 9 इज द वर्टेक्स. यहाँ पर जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो स्टेज को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, हम डायरेक्ट वर्टेक्स का नंबर यूज करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द फ्रॉम द वर्टेक्स 2, क्योंकि 1 के लिए हम कैलकुलेट कर चुके हैं. सो लेट अस स्टार्ट अ लूप, दैट इज फॉर j इज इक्वल टू 2 to n. Do. Now we have to choose an R, a vertex R. ये आपका J होगा और ये आपका R होगा. जब अगली स्टेज में जाएंगे तो ये आपके J हुआ करेंगे, और इन J पे जाने के लिए आपको किसी R को चूज करना पड़ेगा. तो यहाँ पर जैसे 6 वर्टेक्स के लिए R कौन कौन हो सकता है? दैट इज 2 and 3, बिकॉज यहाँ से हम 6 पे जा सकते हैं और यहाँ से हम लोग 6 पे जा सकते हैं. तो these will be the R and that will be the J. So we'll calculate that. So let us start with, let R be a vertex such that R comma J be an edge of the graph, and B cost of R plus C of R comma J, this should be minimum. That is the condition. जब कभी हमें ऐसा R मिल जाएगा, then we will initialize this into the B cost. So B cost of J is equal to this one, that is B cost of R plus C of R J, because this is now minimum. Okay, now we'll obtain the D value जिससे कि हमने पाथ कैलकुलेट किया था. So D of J will be equal to R, and this calculation will be repeated. Now जब ये कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा, हम सारे कॉस्ट कैलकुलेट कर चुके होंगे और अब हमें पाथ फाइंड आउट करना है. सो पाथ फाइंड आउट करने के लिए विल जस्ट राइट अ कमेंट, दैट इज फाइंड पाथ. नाउ पाथ फाइंड आउट करने के लिए, एज वी नो, एट द फर्स्ट स्टेज द सोर्स वर्टेक्स इज 1, सो वी विल इनिशियलाइज इट विथ 1, एंड एट द लास्ट स्टेज दैट इज P of K, the vertex is final, that is n. N is the number of vertices, that is 12. So this value is fixed. We have already obtained that. Now we have to obtain the remaining 5 vertices at each stage. तो हमें 3 बार लूप चलाना होगा यहाँ से. So let's say starting with the for K is equal to, लेकिन चूंकि ये बैकवर्ड मेथड है, हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे. So that is K minus 1 to, कहाँ तक जाना होगा? 2 तक. 1 तक जाने की जरूरत नहीं, 2 तक बस जाना है आपको. And do perform the task. That is P of J is equal to P of J plus 1. So this will be the path, we'll obtain that, and that will be the closing parenthesis. So we'll be having 2 arrays, cost array, and the another array will be the path array. Okay, so this is the cost array and this is the path array.
So let us start with b cost of 1, that is 0.0. So this is b cost of 1 is 0.0. From j is equal to 2, तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे. Let r be a vertex such that j of r be an h of g and b cost of r plus c of rj is minimum. और ऐसी हमें h फाइंड आउट करनी है. तो उसके लिए अब हम क्या कैलकुलेशन करने वाले. Now this will be r and this will be j. We have to calculate this cost. यहाँ पर ये जो कॉस्ट आएगी दैट विल बी 9, 7, 3 एंड 2 बिकॉज वी डोंट हैव टू परफॉर्म एनी कंपैरिजंस. यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे. तो देखिए 2 के लिए क्या वैल्यू पुट करूंगा मैं 9, 3 के लिए क्या वैल्यू पुट होगी 7, देन 4 फॉर 4 इट विल बी 3 एंड फॉर 5 इट विल बी 2. फॉर j इज इक्वल टू 2 व्हाट विल बी द d ऑफ j, that is r. So here for all the entries ranging from 2, 3, 4, 5, the vertex r will be the common vertex, that is 1. क्योंकि यहीं से हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं और इसी वर्टेक्स के कारण ये डिस्टेंसेस मिनिमम हम लोग फाइंड आउट करेंगे. सो यहाँ पर सारी एंट्रीज आपके पास जो होगी वो क्या होगी 1, 1, 1, 1. We have reached to j is equal to 6. j is equal to 6 के लिए r कौन कौन हो सकता है. This may be r and this may be r. क्योंकि इन दोनों वर्टाइसेस से हम 6 वर्टेक्स पे जा सकते हैं. दो वैल्यूज हम लोग ने b कॉस्ट ऑफ r प्लस c ऑफ rj हमें कैलकुलेट करना है. सो आई विल राइट ओवर हियर दैट इज b कॉस्ट ऑफ r प्लस c ऑफ rj. r इज इक्वल टू 2 फॉर r इज इक्वल टू 3. Equal to 6, r may be either 2 or r may be either 3. So we'll calculate that. r is actually 2. So cost of 2 is 9 plus what is c of r j. 2 से 6 पर जाने का जो रास्ता है वो that is 4. This will be 13. Now we will calculate this value for r is equal to 3. b cost of 3 what is that, that is 7 plus c of r j means 3 to 6 जाने के लिए what is the cost, that is 2 and that will come out to be 9. We have obtained this value as 9 and that to be put over j is equal to 6. तो j is equal to 6 पे मैं क्या put कर दूंगा 9. This is due to the vertex 3. So I'll put this r over here. So d of 6 I'll put it over. So j is equal to 6 के लिए r 2, 3 और 5 हो सकता है. So यहाँ 2, 3 और r is equal to 5 एक और एंट्री मिल गई. Cost of 2 9 plus 2 से 7 पे जाने के लिए that is 2. Cost of 3 that is 7 plus 3 से 7 पे जाने के लिए what is that, that is 7. Then cost of next is 7 पे जाने के लिए we'll use 5. Cost of 5 what is cost of 5, that is 2 plus 5 से 8, 5 से 7 पे जाने के लिए because j is 7 that is 11. Now what is that is 11, that is 14 and that is 13. What is the minimum value, that is 11. So this will be cost which will be updated as j is equal to 7. So j is equal to 7 पर we will update the value 11 and this minimum r, that is r for which this cost is minimum will be updated over here. So here it will be 2. Now next loop will continue. We'll calculate for j is equal to 8. For j is equal to 8 what may be the r. 8 पे जाने के लिए r क्या क्या हो सकता है, 2 से जा सकते हैं, 4 से जा सकते हैं, 5 से जा सकते हैं. 2, 4, 5, 2, 4 and 5. Cost of 2 that is 9 plus 2 से 8 के लिए आपके पास cost है 1. The next is r is equal to 4. So b cost of 4 what is that, that is 3 plus 4 to 8 के लिए the distance is 11. Cost of 5 that is 2. So 2 plus 5 to 8 that distance is 8. So I'll take this as a minimum value. So cost of 8 will be 10 and this is due to the vertex 2 and hence due with this statement this will be 2 again. Now j is equal to 9 के लिए r कौन कौन हो सकता है 6 and 7 because 6 और 7 से आप 9 पे आ सकते हैं. So here it will be 6 and here it will be 7. 6 that is 9 plus 2 9 के लिए what is that distance 6 that is 15. Then cost of 7 that is 11 plus 7 to 9 के लिए cost कितना है 4. So that is 15. Both are same. We can take any value. The cost is 15. So here 9 j is equal to 9 के लिए cost क्या आ जाएगा 15 and the r value will be 7. Let's say for example 7. ये वैल्यू हम लोग ने यहाँ पर ले ली. नेक्स्ट आगे चलते हैं. j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10. फॉर 10 व्हाट मे बी द r 6 and 8 मे बी r क्योंकि 6 और 8 से आप यहाँ आ सकते हो. तो 6 and 8 just calculate the values. This cost of 6 that is 9 plus 6 to 10 that is 5.
This will be 14. What is cost of 8? That is 10 plus 8 to 10. What is the cost? That is 5 and it is 15. So minimum value is 14. That is the cost for j is equal to 10. So this will be 14. And this is due to r is equal to 6. So for 10th d p value will be 6. When j is equal to 11 के लिए हम लोग यहाँ पर 11 के लिए r सिर्फ एक ही हो सकता है, that is 8. What is the cost of 8? That is 10 plus 8 to 11. The cost is 6 and this will be 16 and this is the minimum one. So we will take this, assign with this to the 11th index because j is 11 and this is due to r is equal to 8. So we will assign 8 over here. j is equal to 12. इसके लिए r कौन कौन हो सकता है देखें, सारे से 9 से भी हम यहाँ जा सकते हैं, 10 से भी और 11 से. तो r क्या हो सकता है, r is equal to 9, r is equal to 10 and r is equal to 11. So let us calculate. That is cost of 9, 15 plus 9 to 12, that is 4, it is equal to 19. Then cost of 10, what is, it is 14 plus 10 to 12, that is 2, that is 16. Now next is for 11, this is 16 plus 11 to 12, that is 5. So it is actually 20. What is the minimum value? That is 16. So we will update the cost of 12, that is j is equal to 12 as 16. And then this 16 is due to r is equal to 10. So we will update over here. So r will be 10. Actually this is not p, this is actually d. So for path p, there will be 5 entries only because this is 5-stage graph. That is, this is p basically. P of 1 is 1. P of k, that is 5 is equal to 12, that is well decided. Now starting with k minus 1 to 2, the reverse loop will be there. So what is the value of j? So j will be 4 first. So p of 4 is equal to p of 4 plus 1, that is 5. P of 5 is 12. So here it will write d of 12, 10. So this 10 will be initialized as p of 4. So यहाँ पर मैं क्या value put करूँगा? That is 10. So j will become 3. P of 3 plus 1, that is 4. So P of 4 is 10. So D of 10 is 6. P of 3 we have to put it as 6. So यहाँ पर आपको क्या वैल्यू पुट करनी होगी? 6. A की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, J will become 2. So P of 2 will be, here it will be P of 3. Now what is P of 3? P of 3 is 6. So D of 6, 3. So here it will be 3. So P of 2, this is basically 2. So P of 2 is equal to 3. So P of 2 is equal to 3. This will be the path. So it is specifying we have obtained the another path. We may take this path also and we may take this path also. So let us calculate. 1 to 3, then 3 to 6, 6 to 10, 10 to 12. What will be the cost? 1 to 3, the cost will be 7. 3 to 6, 2. 6 to 10, 5. And 10 to 12, 2. So what is the total cost? 16. So the cost is same. पर यहाँ कहीं कहीं जहाँ डबल एंट्रीज आई है उसके कारण से पाथ दूसरा मिला. नो प्रॉब्लम. ये पाथ से भी हमें कॉस्ट 16 ही मिल रहा है जो कि हमने नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट किया था. और इस एल्गोरिथम के थ्रू जब हमने कैलकुलेट किया तो जो पाथ है दैट इज 1 to 3 to 6 to 10 to 12. This is another path. So we are having two paths. That is 1 to 2, then 7, then 10, then 12 with the cost as 16. So we have two paths for this multi-stage graph problem with the minimum cost. Both are valid, both have the same cost. So this is all about the multi-stage graph and that to be using the backward graph algorithm. Please do like, share and comment, subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon. Thank you.